Hello बच्चों, let's read this question. Assertion. In a particular point defect, an ionic solid is electrically neutral even if few of its cations are missing from its unit cells. Reason. In an ionic solid, Frenkel defect arises due to dislocation of cation from its lattice site to interstitial site, maintaining overall electrical neutrality. And following options are given to us. सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखते हैं एंड की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज डिफेक्ट। जो हमारे पास आयनिक सॉलिड प्रेजेंट होते हैं एंड उनके जो अरेंजमेंट में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है इन द पर्टिकुलर क्रिस्टल लैटिस that deviates from the perfect order. So we can write when the arrangement arrangement of the constituent particle particle of a crystal lattice deviates deviates from the perfect perfect order. A defect a defect in or into the crystalline structure of solid arises. Crystalline structure of solid arises. And in assertion पॉइंट डिफेक्ट की बात कर रहा है एंड पॉइंट डिफेक्ट वो होता है जब अरेंजमेंट का जो डिस्टरबेंस होता है दैट इज ड्यू टू द पॉइंट और एन एटम। पॉइंट डिफेक्ट पॉइंट defect arises when the arrangement is disturbed around a point. The arrangement is disturbed disturbed around a point or an atom or an atom. And according to the assertion, it is said जो आयनिक सॉलिड होते हैं उनमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है अगर केटायंस भी मिस कर दिया जाए यूनिट सेल से इन द पॉइंट डिफेक्ट। एंड इट इज करेक्ट बिकॉज सच टाइप ऑफ द डिफेक्ट इज शोन बाय द मेटल्स। जब केटायंस जो है मिस हो रहे हैं फ्रॉम द यूनिट सेल ऑफ द सॉलिड, जो डिफेक्ट अराइज होगा दैट इज नॉन एज मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। सो पहले हमने डिफेक्ट पढ़ा, डिफेक्ट में पॉइंट डिफेक्ट एंड नाउ पॉइंट डिफेक्ट में मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट मेटल डेफिशिएंसी defect, and it arises due to cation vacancy. It arises due to cation vacancy. And जो metal होते हैं in this type of the defect that has the variable oxidation state. And metal in this type of defect, in this type of defect has variable oxidation state or have variable oxidation state. एंड ड्यू टू दिस जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी होती है वो मेंटेन की जाती है बाय द एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज इनटू द क्रिस्टल लैटिस। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी
neutrality is maintained maintained by adding an extra positive charge, an extra positive charge into the crystal lattice into the crystal lattice. So by this we can say जो assertion given है that is correct. And now let us see the reason which says about the Frenkel defect. So let us see Frenkel defect कौन से defect होते हैं. Frenkel defect. And Frenkel defect भी एक point defect का ही part है. And in Frenkel defect जो cation है वो dislocate हो जाता है अपनी side से to the interstitial side. Let us say हमारे पास these are the atoms present और ये एक lattice है. And जो हमारे पास यहाँ पर atoms और ions present है. Let us say जो यही वाला atom था this dislocate into this interstitial side जो empty space है यहाँ पे dislocate हो गया. But जो हमारे पास electrical neutrality होगी that will be maintained because atom remove नहीं हुआ है lattice से. जो हमारे पास this one is just dislocate into the interstitial side in this way. So this is the Frenkel defect कि अपनी position से dislocate हो जाता है cation from its lattice side to the interstitial side. It is the dislocation of cation from its lattice side to interstitial interstitial side. And जो overall neutrality है electrical neutrality is maintaining overall electrical neutrality. Hence we can say जो reason है that is also correct. ये जो ionic solid है Frenkel defect arises due to dislocation of the cation from its lattice side to interstitial side, maintaining overall electrical neutrality. But जो reason है that is not correct explanation of the assertion. So by this we can say जो option second है that is the correct answer if both assertion and reason are are correct, but reason are is not correct not explanation of assertion. Hope you understood it well. Best of luck.